Now we see some application of this theorem in terms of taking some exercise question. That is actually the question number 6.3.12 from the Hogg, McCain's and Craig's book. The statement of this question, that is, let x1, x2 up to xn be the random sample from the beta distribution with parameter alpha is equal to beta is equal to theta. So both of the parameters are equal to theta, and the parameter space, that is actually theta, and that is equal to theta is equal to 1 and 2. So what we have to do, that show that the likelihood ratio test statistic, which is the capital delta, for testing null hypothesis theta is equal to 1 against the alternative hypothesis theta is equal to 2, is a function of the statistic w, that is equal to some log xi plus some log 1 minus xi. So basically हमने वो थ्योरम को यूज करना है, और जो हमारे पास कैपिटल डेल्टा है, वी हैव टू शो दैट कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो दैट इज एक्चुअली इन टर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन ऑफ दिस w होगा. सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड दैट. फर्स्ट वी राइट डाउन द PDF. The PDF is f of x theta, that is 2 theta gamma divided by gamma theta x raised to power theta minus 1 into 1 minus x raised to power theta minus 1, and that is 0 less than x less than 1. क्योंकि हमारे पास दोनों पैरामीटर्स थीटा ही हैं, तो ये हमारे पास गामा थीटा और गामा थीटा आ जाएगा. नाउ द लाइक्लीहुड फंक्शन L of theta, I just write down directly, that is 2 theta raised to power n over gamma theta raised to power 2n, and that is pi I varies from 1 to n xi theta minus 1 into 1 minus xi theta minus 1. So if we take the log likelihood function of this one, that is actually L of theta, और ये हमारे पास आ जाएगा n log gamma 2 theta minus 2n log gamma theta, and that is plus theta minus 1 into sum log xi plus theta minus 1 into sum log 1 minus x. तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, so that we may find some value of the maximum likelihood, so that is actually curly L theta over curly theta, so that is actually n over gamma 2 theta into psi of 2 theta, that is basically psi represent the di gamma, that is actually the derivative of the gamma function. So minus 2n over gamma theta into psi of theta plus that is sum log xi आ जाएगा इधर से, और इधर से हमारे पास sum log 1 minus x आ जाएगा. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, that is sum log xi plus sum log 1 minus xi. So to find the MLE of theta, we need to equate above equation equal to 0. Now we can see that कि अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट भी कर देते हैं, then we are not in the position to find the theoretical value of the theta. Here only the numerical solution could be possible by using some iterative method, because this is a non-linear equation और इसमें हमारे पास डाई गैमा फंक्शन आ जाता है, तो एग्जैक्टली थ्योरेटिकल थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. हाँ, इसको हम न्यूमेरिकली आइटरेटिव मेथड को यूज करके हम थीटा की कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं.
एक्चुअल हमारा मकसद जो है वो हमें थीटा हैट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि हमने ये शो करना है कि ये जो हमारे पास लाइक्लीहुड रेशियो फंक्शन बनेगा वो एक्चुअली बेसिकली इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है। तो इसको हम अगर ऐसे लिख लें थीटा हैट को, इफ आई राइट डाउन थीटा हैट दैट इज एक्चुअली सम फंक्शन ऑफ थीटा प्लस जो हमारे पास बाकी का फंक्शन है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज actually equal to some log of xi plus some log of 1 minus xi. Also, under the null hypothesis, that is theta is equal to 1, then the likelihood on the basis of null hypothesis अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो we will find is equal to 1. So our statistic which is capital delta that is actually 1 over f of theta plus w, and you can easily say that you can easily see that the test statistic which is capital delta is a function of w, and that is only which we want to show that. तो इसमें सिर्फ हमने यही शो करना था कि जो हमारे पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जो रिजल्टिंग हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वो इट इज सम फंक्शन ऑफ w. सो दैट इज यू कैन सी दैट इज सम फंक्शन ऑफ w. सो दैट इज एक्चुअली वी वांट टू शो दैट.